Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331 4444, 2371-7106 and 2342-1050. If you are calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Kumar. Let's take a look at the headlines first. Domestic stocks witness gains of more than 0.5%. Sensex finishes above 61,800 points. Nifty settles above 18,400 level. Sovereign gold bonds open for subscription today to be opened till Friday, and the rupee appreciates 17 paise against the US dollar. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह कार्यक्रम में ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। टेलीफोन नंबर 23314444, दूसरा नंबर है 23717106 और तीसरा नंबर है 23421050 पर फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ बाजार विश्लेषक डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और अब पहले हिंदी में हेडलाइंस भी जान लेते हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज 0.5% से ज्यादा की बढ़त। सेंसेक्स 61,800 और निफ्टी 18,400 अंकों से ऊपर हुए बंद। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदारी के लिए आज से खुला, शुक्रवार तक रहेगा जारी और डॉलर के मुकाबले रुपये में 17 पैसे की मजबूती। वैश्विक बाजार में नकारात्मक संकेतों के बावजूद घरेलू शेयर बाजार में आज 0.5% से ज्यादा की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 61,800 अंकों के ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 18,400 अंकों के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 468 अंक या 0.76% चढ़कर 61,806 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 151 यानी 0.83% चढ़कर 18,420 अंकों पर बंद हुआ। बीएसई व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स में 0.67% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.29 की बढ़त देखी गई। The BSE Sensex and the NSE Nifty today posted gains of more than 0.5%. The 30-share index Sensex ended above 61,800 points, while the index having shares of top 50 companies, Nifty, finished above 18,400 level. Both indices added even as the cues from global share markets were negative. Sensex climbed 468 points or 0.76% to close at 61,806 points. Nifty also rose 151 points or 0.83% to settle at 18,420. In the broader market, at the BSE, the mid-cap index gained 0.67% and the small-cap index ended 0.29% up. In the Sensex pack, 24 companies posted gains while 6 logged losses. Mahindra & Mahindra was the top gainer as it added 3.1%, followed by Power Grid, which surged 2.6%. Bharti Airtel gained 2.2% and Bajaj Finserv added 2%. On the other hand, TCS declined 1.1%, Infosys slipped 1%, and Tata Motor fell 0.8%.
In sectoral indices at the BSE, 18 sectors gained while 2 logged losses. Services sector gained 1.9%, auto index surged 1.7%, and FMCG sector added 1.4%. Consumer discretionary and power, both indices rose 0.9% each. On the other side, IT sector declined 0.6% and tech index fell 0.3%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,044 companies gained while 1,581 fell. Shares of 156 companies remained unchanged. और इसी बीच हमारे साथ कोलकाता से पहले कॉलर हैं अतानु साहा। अतानु साहा जी, आप प्रश्न पूछें। हाँ, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। नमस्कार। नमस्कार। यस सर, नमस्कार सर। माय क्वेश्चन इज द expiry date of our markets, including stock markets. The expiry date of our different markets time. And another question that is related with gold and silver. What its current and future situation? Thank you very much. So your first question is regarding an expiry date. So the stock markets don't have an expiry date. Usually contracts which are future-based contracts, they have an expiry date on which they expire. There is a trade settlement date after which the trade is settled. So maybe you're asking as to how much time it takes for this trade to settle. So T+1 is the time period in which it settles down. And your second question is as far as the gold and silver is concerned. Overall, the markets for the metal sector has been, in the positive territory. And because gold is primarily used as a safe haven investment, it has seen a lot of buoyancy and would see in most uncertain times, even in recessions, a positive direction. Silver has been used in a lot of industrial activities, has been also utilized in the IT sector a lot. So it has seen a lot of demand lately. Yes, and now we're joined by Gurunath, who's calling us all the way from Thane. Yes, Gurunathji, please ask a question. Gurunathji, a request to you, please reduce the volume to 0 of your radio set. जी जी मैम, नमस्कार। नमस्कार जी जी, सवाल पूछें गुरुनाथ जी। नमस्कार मैम, मेरा सवाल था ये जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में जो धोखाधड़ी होती है, अभी जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट आया था उसमें वो साल भर में मतलब 150 या उससे भी ज्यादा जो उसकी धोखाधड़ी होती है। तो मैम, ये जो यूजर्स होते हैं कार्ड यूज करते, क्या इनके लापरवाही की वजह से ये जो और साइबर क्रिमिनल फायदा उठाते और आगे इसका जो ट्रांजैक्शन सिक्योर करने के लिए मतलब आरबीआई क्या कदम उठाती है? थैंक यू मैम। जी देखिए, आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे आप वो डेबिट कार्ड पे करते हैं या क्रेडिट कार्ड पे होते हैं, उनके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जिसके अंदर जैसे आपके फोन पे ओटीपी आना है और उस ओटीपी के द्वारा फिर आपकी ट्रांजैक्शन को कंफर्म करना है। ये कुछ सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए जाते हैं। सिमिलरली आप अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसका सीवीवी किसी को ना बताएं और अपने क्रेडिट कार्ड नंबर भी कहीं ना दें। जब आप अपना पिन डालें तो आप उसको प्रोटेक्ट करके डालेंगे। कुछ चीजें होती हैं जो ध्यान में रखी जानी चाहिए, पर फिर भी क्योंकि हैकिंग होती है, लोग मेटालिक कार्ड से या चिप से डेटा हैक कर लेते हैं, तो लोगों या फोन आजकल हैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो उनके पास पहुंच जाती है। तो काफी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती हैं। कभी कभार कुछ फोन भी आते हैं जिसपे आप अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जिसकी वजह से ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती हैं। अगर आप बैंक को 3 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये ट्रांजैक्शन आपने नहीं की है उस ट्रांजैक्शन के होते ही, तो वो बैंक इमीडिएटली उसको स्टॉप करने का कर सकता है और आपका पैसा बच सकता है। पर अगर आप उसको बहुत डिले कर देते हैं तो फिर सारी जिम्मेदारी आप पर पड़ जाती है। Right, that was very important information, Dr. Yamini. Indeed, if for any problem, if you want to block your card, you must take action within 3 days. And yes, we do see that there is problem on the part of those who hack or those who clone. And on the other hand, when consumers get a little श्रोता इसमें एक बात और जानना चाहेंगे कि कई बार क्या होता है कि अगर 3 दिन में वो नहीं जा पाए तो साइबर क्राइम के पास जाते हैं। हमारे जानकारों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये फ्रॉड होता है, तो ऐसे में क्या करें मैम? ये बड़ा एक चिंता का विषय रहता है।
जी देखिए, साइबर क्राइम पुलिस को इमीडिएटली आप रिपोर्ट करेंगे, आप ऑनलाइन भी रिपोर्ट कर सकते हैं और उस रिपोर्ट की जो कॉपी है वो अपने बैंक मैनेजर को इमीडिएटली जो है आप ईमेल से या ऑफिस जाकर के उसकी रिसीविंग लेकर के रखें और फिर वो बैंक यूजुअली उसको फॉलो अप करता है। सबसे पहले तो होता है कि आप बैंक को उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करें और साथ ही साथ उसको रिपोर्ट करें, क्योंकि जैसे ही आप बैंक को रिपोर्ट करते हैं वैसे ही वो बाकी की ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कर देते हैं और आगे ट्रांजैक्शंस नहीं होने देते। तो इसलिए ये जरूरी रखता है कि आप अपने बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें जब भी आप कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन देखें और किसी भी जो ऐसे कॉल्स आते हैं जिसके अंदर आपको कहा जा रहा है कि आपको पैसा ट्रांसफर करना है या आपकी LIC का प्रीमियम ड्यू हो रहा है, प्रीमियम आप जो मैच्योरिटी क्लेम है वो आपके ऊपर ड्यू पड़ रहा है और आपको ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, तो उसको 10 बार चेक करके फिर किसी को अपना कोई भी इंफॉर्मेशन दें और बैंक इंफॉर्मेशन या अपनी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन ऐसे ट्रांसफर ना करें। जी हाँ, जी हाँ। अगर हमारी अगली श्रोता हैं कोलकाता से सहेली घोष। सहेली घोष जी, अपना प्रश्न पूछिए आप। हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ हाँ जरूर। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, हमें जो जानना है कि SBI का जो स्कीम है ना SIP। जी हाँ। हाँ, तो उसका जो SIP है उसके बारे में हमें कोई मतलब नॉलेज नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि SIP क्या है या कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, रिस्क होगा कि नहीं, इसके बारे में। SIP की बात कर रहे हैं जो म्यूचुअल फंड्स में होता है, जिसके अंदर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा आप मंथली जो है निवेश करते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि आप कितना पैसा एक म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। आप डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि जो इक्विटी में, डेट में डिफरेंट प्रोपोर्शंस में निवेश करते हैं और उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। ऐसे ही SBI का जो म्यूचुअल फंड है जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं, वो थोड़ी थोड़ी इकाइयों में जब आप निवेश करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड तक, उसको हम SIP प्लान कहते हैं। Yes, and SIP seems to be very popular these days. Well, now we have a call from Raja, who's calling us from Lucknow. जी राजा जी, सवाल पूछे। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। मैम, मैंने जो है ये सहारा बैंक जो थी, सहारा बैंक में अपना पैसा निवेश किया था, तो लगभग वो था 5 साल का, तो 2019 में समय पूरा हो गया, लेकिन अभी तक पैसा नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, ये डिपेंड करता है आपने किस स्कीम में या किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में निवेश किया था। अगर आपने किसी बैंक में निवेश किया है तो आप RBI ओम्बड्समैन को लिख सकते हैं कि आपको पैसा नहीं मिला। पहले प्रक्रिया यही होती है कि आप जो स्कीम के मैनेजर्स होते हैं या जो ब्रांच के मैनेजर्स होते हैं उनको लिखते हैं अपनी स्कीम के बारे में पता करते हुए कि उस स्कीम का जो पैसा है वो आपको क्यों नहीं मिला। अगर वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फिर आप RBI के पास जाते हैं। अगर वो स्कीम बैंकिंग के अंदर आती है, अगर वो स्कीम या कोई शेयर है या डेट है, अगर वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है या कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, तो आप सेबी को रिपोर्ट करते हैं, सेबी से इन्वेस्टर ग्रीवियंस में डालते हैं। Right, and after 1 month of complaint, you can go to the RBI also. That is also an additional thing. And now, let's take a look at the status of rupee. जी विभूति जी, विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 17 पैसे मजबूत होकर 82 रुपये 70 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.15 की गिरावट के साथ 104.54 पर कारोबार कर रहा था। So, Dr. Yamini, how do you see the... all right, before we go any further, we are joined by Jitendra calling us from Jaipur. Yes, Jitendra ji, please ask your question. सवाल पूछिए अपना जी। Hello? Hello? Hello, Jitendra ji, सवाल पूछिए अपना। I don't know, there seems to be either he's offline or whatever. Hello, Jitendra ji. All right. Dr. Yamini, as we're talking to you, how do you view with the status of rupee at 82 rupees 70 paise against the American currency? It has been hovering around this now for quite a while. What's good for the exports is not good for the import and vice versa. Are we comfortable with this figure?
Well, I think it is a very challenging time for India in terms of the rupee and dollar exchange rate, primarily because the FIIs have been taking out money because the Fed has raised interest rates. Also, there has been a strong inflationary pressure because of the crude oil prices, also because of the depreciation of rupee. So because of these three factors that we can see, the rupee tends to have a lot of pressure. And it has been stable around 82 and has been able to manage things. But it's not very good in terms of, because it imports inflation one, but it is good for the exports overall because a depreciated rupee makes it more competitive to the overall world markets. Things like imports become expensive, so there is an automatic adjustment in the current account balances to take care of most of the things for the country. हमारे अगले श्रोता सिरसा से भागवत हैं, वो अपने प्रश्न के साथ मौजूद हैं। भागवत जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, प्रश्न पूछें। नमस्कार जी। नमस्कार। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई बैंक में मिसबिहेव करे कर्मचारी, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे शिकायत करनी चाहिए? अगर आपके साथ कोई बैंक का व्यक्ति या एम्प्लॉय या कर्मचारी मिसबिहेव करता है तो आप ब्रांच मैनेजर को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर ब्रांच मैनेजर उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता तो उसके जो रीजनल मैनेजर है आप उसके पास जा सकते हैं अपनी कंप्लेंट की कॉपी डाल करके। और अगर वो भी नहीं एक्शन लेते तब आपको कुछ समय देना होगा उन्हें, फिर आप उनके चेयरमैन तक लिख सकते हैं। अगर वो भी नहीं सुनते और अगर पूरा बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा तब आप आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई के ओम्बड्समैन पे जो उस कर्मचारी ने गलत काम आपके साथ किया है आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। राइट। जी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एसजीबी आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया और इसकी खरीदारी शुक्रवार तक के लिए खुली रहेगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एसजीबी योजना की ये तीसरी श्रृंखला है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सब्सक्रिप्शन अवधि के दौरान बॉन्ड का मूल्य 5,409 रुपये प्रति ग्राम होगा। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करने वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। मंत्रालय के अनुसार ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का इश्यू प्राइस 5,359 रुपये प्रति ग्राम होगा। गोल्ड बॉन्ड में 1 ग्राम का न्यूनतम निवेश संभव है। एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति अधिकतम 4 किलोग्राम, जबकि ट्रस्ट और समान संस्थाएं अधिकतम 20 किलोग्राम ही निवेश कर सकते हैं। Well, gold lures everybody, particularly the Indians. Before we ask you any question, Dr. Yamini, friends, we shall go in for a short break and we'll be back soon. Stay tuned. अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। All right, welcome back, friends. You're tuned into Market Mantra. We are now joined by Dharamveer calling us from Delhi. Yes, Dharamveer ji, please ask a question. हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, धर्मवीर बोल रहा हूँ गांधी दिल्ली से। जी। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम नमस्कार मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम गोल्ड में पैसा लगाना चाहें तो उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा और क्या हम गोल्ड मेटल खरीद सकते हैं या कोई? जी देखिए, अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ओपन है मार्केट में, आप उसके अंदर निवेश कर सकते हैं जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है 2.5% के आसपास, 2.4 या 2.5% के आसपास। और आप जब उस गोल्ड को मेच्योरिटी पे बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं देना पड़ता। खास तौर पे आपको जब रिडम्पशन मिलेगी तो वो जो गोल्ड रेट उस मेच्योरिटी डेट पे होगा
तो उस रेट पर आपको वो रिडम्पशन नहीं मिलेगी। तो आप सीधा सीधा गोल्ड के अंदर निवेश कर रहे हैं बिना फिजिकल मेटल को खरीदे और बिना उसकी सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न हुए। और क्योंकि ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट काफी हद तक सेफ रहती है, मार्केट डिटरमिन्ड भी रहती है साथ ही। All right, since we are at the gold, let's talk more about gold. Gold price was up 90 rupees at multi-commodity exchange for February contracts. The precious metal was trading at 54,390 rupees per 10 grams. Silver was also up 315 rupees to trade at 67,965 rupees per kilogram for March contracts when reports last came in. In the New York Mercantile Exchange, gold was trading up at $1,803 and 70 cents per ounce. Silver was also trading up at $23.50 per ounce in intraday trade. Yamini, when we talk about gold investment, one is of course going there physically buying gold, and one is sovereign gold bonds. How would you compare one over the other? Because Indians love to collect gold, and maybe for a long-term investment, is that a wise thing to do? And compare that with the gold bonds? See, in India, when gold is purchased, there are different dimensions to it. One is consumption itself, where wearing by women or by even men is considered. So a certain portion is used for that consumption. Besides that, when you want to look at investment options, then it is always good to go in for a financial instrument like a sovereign gold bond, because it gives you an interest rate on an annual basis, also gives you a redemption at the market rate, and the capital gains is not taxable, so you're exempted from that also. Also, then there is no security issues of keeping the gold. You know, if you're keeping a bond, you don't have to worry that somebody may steal it or there might be a theft or some kind of a problem. You don't have to keep it in a locker or any other issue with that. Also, you don't have to pay any making charges, right? Like buy a particular thing, unless you buy a biscuit or something like that, you don't have to pay making charges. So those costs are automatically removed from your gold, and you get the money back in the same amount of market determined rates at the time of maturity, which is 8 years or whatever the number of years you want to keep it. And you can also transfer these bonds to somebody who will equally gain, by the transfer, and you can get money at that point of time also. So they're completely liquid. All right. And so you, as you said, the interest rate annually would be about 2.5% on the gold bonds, right? Hello? Hello, yes. Yeah. All right. आज लोकसभा से जरूरी खबर आई है। सरकार ने क्रिप्टो धोखाधड़ी के मामलों में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत 900 करोड़ रुपए से अधिक की कुर्की और जब्ती की है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वर्तमान में क्रिप्टो संपत्तियां अनियमित हैं और सरकार क्रिप्टो एक्सचेंजों को पंजीकृत नहीं करती है। उन्होंने कहा कि ईडी क्रिप्टो धोखाधड़ी के कई मामलों की जांच कर रहा है। उन्होंने बताया कि 12 क्रिप्टो एक्सचेंज जांच में 87 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय जीएसटी चोरी का पता चला है और ब्याज और जुर्माने के साथ 110 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की गई है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि फेमा के तहत 289 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है और 2,790 करोड़ रुपए की क्रिप्टो संपत्ति से जुड़े लेन देन के लिए जनमय लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। So, Dr. Yamini, how do you say that? Of course, there are a lot of news now about misuse of cryptocurrency and crypto frauds. You don't know from where it's coming and where it's going. It's in a space where you can't connect. And how do you view the present situation? Well, overall, crypto by itself is an asset, where one does not know the issuer. Also, when one deals with it, the transactions are known to each other. They are quoted, but one doesn't know from where it comes and where it goes. The transaction by themselves, involve a lot of anonymity, and since these transfers involve anonymity, they are then used for purposes which may not be, much in line with law or sometimes not appropriate. So thereby, we have seen cryptos being used for, money laundering or certain other activities also. But overall, again, no asset is good or bad, but it depends upon how it has been used.
So the anonymity, one of the issuer by itself, and the other of the transaction doers also, does make a lot of difference in terms of how it is used. Despite all the risks and not being regulated, a lot of people do invest in cryptocurrency, especially the youngsters. They are somehow attracted to it. What do you think is the factor which is making some of the people? Is it? What do you think is the attracting factor? Well, I think because one, crypto seems to be a lot in trend. So what becomes in trend is the amount of volatility and the gains it has been offering in terms of its returns. Ever since there was a lot of uncertainty in the geopolitical scenario, people have been switching to cryptos for different things. Also, some countries recognize cryptos as, not legal tenders, but as legitimate assets in which you can transfer money. So that also added value to cryptos, which has, given more momentum to the crypto movement across the world. Some countries have banned it, some countries have not banned it. Some countries are still debating upon what kind of a regulation internationally should be used in it. So because of these particular reasons, I think there is uncertainty and there is volatility, and because of the speculative gains that are there, it has become a very popular asset among the youth. Yeah. So even though the returns may be high, the risks are probably even higher, one can say. Higher, because it doesn't have an intrinsic value. It's not backed by any central government or by a government or by a bank. So the risk is complete there. One does not know if tomorrow it goes off. Nobody knows where to go. Right. It's a big, big gamble from that perspective. Right. Moving on to the Asian markets. Asian stocks today fell except Singapore's Straits Times Index, which added 0.5%. China's Shanghai Composite Index plunged 1.9%, and Japan's Nikkei 225 declined 1.1%. Hong Kong's Hang Seng fell 0.5%, and South Korea's Kospi slipped 0.3%. European shares were up in intraday trade. London's FTSE 100 and German's DAX both fell 0.6% each, while France's CAC was trading 0.7% down when reports last came in. Do you think this reflects the fact that China is now going through a bad COVID crisis and energy situations continue to haunt in Europe? Is that a reflection of the situation? But overall, the world economies are going through a very challenging time, one, because of the slowdown. Further, the inflation pressures build on as China is one of the global supply chain providers in the world economies. Further, the Europe or the other countries are also going through a recessionary phase, one, because the central bank is continuously raising the rates and the accommodative stance has become a tightened stance right now in the monetary policy. So all of that is affecting the overall economic growth in the world market. Right. Well, oil today fell more than 2% as market assessed the aftermath of interest rate hikes at central banks. However, oil prices were poised for the biggest weekly gains in 10 weeks amid supply disruption concerns and hopes for a recovery of demand in China. In intraday trade, Brent crude was trading at $79.60 per barrel, while WTI crude prices were at $74.55 per barrel. Can't ignore China. It is said that streets are vacant there because of the COVID crisis. That and a quick comment on the oil situation, Dr. Yamini. Well, overall, the demand in the market is much questioned, primarily because of the slowdown which is estimated in the world economy. So there can be a lower price of the crude oils in coming future. All right. On that note, we'd like to thank you, Dr. Yamini, for being with us and giving us your views and reviews. And friends, thank you very much. And friends, before we wind up, here is a close reminder of the headlines once again. Domestic stocks witness gains of more than 0.5%. Sensex finishes above 61,800 points. Nifty settles above 18,400 level. Sovereign gold bonds open for subscription today, to be opened till Friday. And the rupee appreciates 17 paise against the US dollar. On that note, it's time for us to bid
bid adieu in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Vibhuti Mishra ji, to say Namaskar. Namaskar. We'll see you again. Market Mantra.